பிரதமர் மோடி புட்டினை சந்தித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். क्षमता है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत एवं रूस की प्रतिभा संपन्न बच्चे सम्मिलित रूप से अपने इनोवेटिव आइडियाज का प्रदर्शन आज दोपहर के बाद करेंगे। ये आइडियाज उन्होंने मिलजुल कर विकसित किए हैं। हम भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में और बिजनेस के व्यापक अवसरों में रूस की भागीदारी का स्वागत करते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब से कुछ समय बाद हम इंडिया रूसिया बिजनेस समिट में भी भाग लेंगे। इसमें दोनों देशों से करीब 200 प्रमुख आर्थिक उद्यमी भाग ले रहे हैं। भारत एवं रूस पारंपरिक हित के सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घनिष्ठता से सहयोग करते रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन तथा मैंने इन पर भी विस्तार से चर्चा की है। भारत और रूस तेजी से बदलते हुए विश्व में मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलेटरलिज्म को सुदृढ़ करने पर एकमत है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, अफगानिस्तान तथा इंडो पैसिफिक के घटनाक्रम, जलवायु परिवर्तन, एससीओ, ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय संगठनों एवं G20 तथा आसियान जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग करने में हमारे दोनों देशों के साझा हित रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग और समन्वय को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। मैं प्रेसिडेंट पुतिन द्वारा रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिए उठाए गए कदमों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। भारत इस क्षेत्र में सहयोग के लिए तत्पर है। आज लिए गए निर्णयों से हमारे सहयोग में और वृद्धि होगी तथा चुनौतियों भरे विश्व में शांति और स्थिरता की बहाली में योगदान मिलेगा। भाई और बहनों, भारत और रूस के संबंधों की शक्ति का स्रोत सामान्य जन में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और मैत्री है। हमने आज ऐसे कई प्रयासों पर विचार किया है जिनसे पीपल टू पीपल संबंध और मजबूत हो और दोनों देशों के लोगों की, विशेषतः युवाओं की एक दूसरे के बारे में जानकारी और आपसी समझ और बढ़े। इससे भारत रूस के संबंधों के भविष्य की एक नई नींव का निर्माण होगा। फ्रेंड्स, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारत रूस ये मैत्री अपने आप में अनूठी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विशिष्ट रिश्ते के लिए प्रेसिडेंट पुतिन की प्रतिबद्धता से इन संबंधों को और भी ऊर्जा मिलेगी और हमारे बीच प्रगाढ़ विश्वास एवं मैत्री और सुदृढ़ होगी और हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियां प्राप्त होगी। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्पासिबा। Thank you, sir. Now it is my pleasure to invite the President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, to deliver his statement to the media. Dear friend, Your Excellency Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, it is always our great pleasure to come to India because we know that here we will find an environment of sincere friendship, business-like communication and cooperation. Our nations and states have for a long time been connected through a strong relationship of friendship, mutual respect and sympathy. Yesterday, during the working dinner with Prime Minister Modi, and I'm, by the way, very grateful to you for this sign of friendship, for giving us this opportunity to talk in this very close format and to discuss the most important and relevant
topics on the agenda, on the global agenda, and discuss the fundamental issues of Russian-Indian cooperation and to outline new horizons. And today, first in the restricted format and then with participation of delegations, we discussed the key areas of our cooperation. We've had a very meaningful discussion on the whole range of issues of bilateral cooperation. We have discussed in detail relevant topics of international and regional agenda. We have adopted a joint statement which reflects almost all aspects of Russian-Indian cooperation. We have outlined large-scale plans for a long-term prospect. A solid package of interagency and corporate documents we have just signed today have been prepared for the visit, and its goal is to further develop and deepen our bilateral ties in various areas. It is true that we indeed discussed during these negotiations our trade and investment cooperation, and broadening this kind of cooperation is of utmost importance for me and for Mr. Prime Minister. We have set a goal of increasing the goods turnover up to $30 billion by 2025, and the amount of mutual investments up to $15 billion. And in this context, we were pleased to note that last year mutual trade grew by 21%, exceeding $9 billion. And over the 7 months of this year, it has added another 20%. If we proceed moving at this pace, we will be able to reach our goal even before the set framework. Business circles of Russia and India maintain close contacts. They implement large joint investment projects. Representative Indian delegations took part in St. Petersburg Economic Forum and in the Eastern Economic Forum in Vladivostok. And it is my great pleasure to once again invite Mr. Prime Minister to participate in the next Vladivostok Forum as the main guest at the Vladivostok Economic Forum in September 2019. Russian-Indian Business Forum is taking place in New Delhi these days, and Mr. Prime Minister and I will deliver a statement to its participants, and we will support useful initiatives to develop cooperation in key areas of economy and finance. Deepening our cooperation in energy sector is one of the topics that we have paid a lot of attention to together with Mr. Prime Minister. We gave a positive assessment of implementation of interagency program of cooperation in this strategic area. Russia is a reliable supplier of hydrocarbons to India. We are successfully implementing long-term contracts through Rosneft and Gazprom to ensure to supply the Indian economy with energy commodities. India imports Russia's liquefied natural gas. We're supplying this gas from Sakhalin-1 field, in which Indian partners own 20%. In June, the first batch of LNG was sent to the Indian market within the framework of the contract between Gazprom and Gas Authority of India Limited. We also welcome interest of energy companies from India to expand their businesses in Russia. We're ready to consider the possibility of cooperating within such programs as Far Eastern LNG, Arctic LNG2, and also other projects to explore natural resources of Siberia, Yamal, and continental shelf of the Russian Federation. We have discussed in detail the flagship project in the peaceful use of nuclear energy, Kudankulam nuclear power plant. The first 2 units of this nuclear power plant are gaining their full capacity. The 3rd and 4th units are being constructed. The 5th and 6th units are to be constructed next. According to the agreements that we possess, based on Russian high-tech technologies, we plan to build 12 power units in the next 20 years in India. We have touched upon strengthening our cooperation in industry and investment. We talked in particular about machine building, metallurgy, agriculture, medicine, pharmaceuticals, and ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களையும் கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்கள் குறித்த விவரங்களையும் பின்னர் வரும் செய்திகளில் விரிவாக பார்க்கலாம்.